सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद। 5 नवंबर 2023 और आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं भारत के न्यायिक व्यवस्था के बारे में, और इस तरफ पूरे देश का भी ध्यान है। बदलते परिदृश्य में ये आज का जो वेबिनार है वो द अवेयर कंज्यूमर को ऑर्गेनाइजर हैं, और प्रफुल्ल डी सेठ जी चेयरमैन कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन, और बिजोंदा जो एडिटर हैं द अवेयर कंज्यूमर, पब्लिशर हैं, एडवाइजर RJS एडवाइजर भी हैं। आप सभी का RJS राष्ट्रीय संयोजक और फाउंडर RJS PBH उदय कुमार मन्ना स्वागत करते हैं। प्रफुल्ल डी सेठ जी RJS PBH ऑब्जर्वर हैं, और आज हम लोगों की मुख्य अतिथि माजा दारूवाला जी हैं। पहली बार आप आई हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। पेबुल मुदगल जी जो कि कीनोट एड्रेस प्रस्तुत करेंगे, आपका भी स्वागत है। ये 9 साल में हो रहे हैं। हम लोगों ने राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम में एक पुस्तक का विमोचन किया था, जो अमृत काल का सकारात्मक भारत, ये सीरीज चल रही है जो 2047 तक चलेगी। ये पहली किताब है जो कि एक डॉक्यूमेंटेशन है सकारात्मक भारत उदय आंदोलन का, और ये 2047 तक एक दस्तावेज के रूप में भारत सरकार को प्रेजेंट किए जा रहे हैं, लाइब्रेरीज में पहुंचाई जा रही हैं। अगली किताब 21 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में लॉन्च होगी, जिसके कि हम लोगों के विज्ञापन दाता धीरे धीरे आ रहे हैं। ये सब RJS फैमिली से हैं। प्रभात नमकीन, इनका स्वागत है, धन्यवाद है। और यहाँ पर सुमन त्यागी जी और सत्येंद्र त्यागी जी, ये हम लोगों के RJS के पॉजिटिव एम्बेसडर हैं। इनका भी विज्ञापन LG डिस्ट्रीब्यूटर है। अंकुर त्यागी जी, डॉक्टर अंकुर त्यागी जी और डॉक्टर प्रीति त्यागी जी, ये हम लोगों के विज्ञापन दाता हैं। ये 3 विज्ञापन दाताओं का आज इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। अमृतकाल का सकारात्मक भारत 2 के विज्ञापन दाता का। और अब आइए हम लोग बात करते हैं उस न्यायिक प्रणाली की, उस न्यायिक सिस्टम की, जो भारत में इतने बड़े भूभाग के क्षेत्र को किस तरह से संविधान को समर्पित, ये संविधान के आधार पर चलने वाला जो न्यायिक प्रणाली है, उसकी शुरुआत अगर कहें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किंग जॉर्ज प्रथम द्वारा बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में मेयर कोर्ट स्थापित करके भारत में न्यायिक प्रणाली की शुरुआत 1726 में। और आजाद भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, और सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय है। और नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करते हैं। न्यायपालिका की मुख्य भूमिका कानून के शासन की रक्षा करना और कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। यह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, विवादों को कानून के अनुसार सुलझाता है, और ये सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र व्यक्तिगत या समूह तानाशाही को रास्ता नहीं देता है। तो इस तरह से ये जो है कानून व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चले। और RJS PBH जो है वो पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव इंडिया करके एक नई दिशा दे रहा है, जिससे कि हर विषय को हम लोग लेते हैं। तो आज न्यायिक व्यवस्था पर बातचीत करने के लिए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए मैं स्वागत भाषण के लिए द कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के चेयरमैन प्रफुल्ल दी सेठ जी को आमंत्रित करता हूं, जो बड़ोदरा गुजरात से जुड़े हैं।
जी प्रफुल्ल भाई। Praful bhai, you have to unmute. Thank you. Jai Hind. I welcome you all to 181st episode, 181 of the JANAKI SANSTHAN Public Broadcasting House, सकारात्मक पत्रकारिता और सकारात्मक भारत। जब जब हम बात करते हैं हमारी न्यायपालिका के बारे में, तो कोई ऐसे प्लेजेंट अनुभव भी होते हैं हमें, और कई बार हमको रिमाइंड कराते हैं कि इतने प्लेजेंट भी नहीं थे। हमें पर्सनली होते हैं, हमारे आसपास के जानने वालों को होते हैं, हमारे साथ जो कार्यकर्ता काम करते हैं, ये सब अपने प्लेजेंट और अनप्लेजेंट अनुभवों की बात करते हैं। अनप्लेजेंट अनुभव में तो ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंट विजिट्स करनी पड़ती है कोर्ट्स वगैरह में फॉर फ्लिप्सी रीजंस, एंड समटाइम्स द पुलिस डिपार्टमेंट दे आर ह्यूमिलिएटेड at the police station. So these are some of the things that we keep hearing, but overall I can say that the consumer's experience is not very pleasant with our Nyayapalika, and therefore it's obvious anxiety when will the judiciary and the police be able to build up capacity and deliver justice to the consumers of India. Admit this is not an easy task as it sounds, but surely there are efforts taking place in that direction, and consumers obviously would want to know how can we ensure speedy and expeditious trials, and how can we get speedy and expeditious justice. How can our marginalized segment of the society get proper justice? How can we deal with the perennial corruption that is plaguing our society and that is there in judicial system also? And what about capacity creation for courts and jails and the police as such? So today, RJS Parivar has invited two of the most prominent and eminent knowledgeable experts on the subject to educate us on all these aspects. The backdrop is the India Justice Report, and the title of today's program is India Justice System Achieving Consumer Satisfaction. Let me briefly introduce our chief guest, Ms. Maja Daruwala. Maja Daruwala is a barrister from Lincoln's Inn and has been working to advocate for rights and society justice for over 40 years. Her special interests lie in the civil liberties, gender equality, systems reform, rule of law, accountability, and promoting access to information and access to justice. For 20 years, she was the director of the Commonwealth Human Rights Initiative, where she is now a board member and a senior advisor. The director of the Commonwealth Human Rights Initiative, also known as CHRI, is an international NGO which is mandated to ensure practical realization of human rights across Commonwealth and has a special focus on police and prison reforms and the right to information. Over the past 3 years, Ms. Daruwala has also been senior advisor to Tata Trusts, India's largest philanthropy. She's convener and chief editor of the India Justice Reports and first ever state-by-state ranking of the structural capacity of the justice system to deliver the mandate. She's a board member of the Population Foundation of India and the Media Foundation and the Center of Justice.
social justice that promotes civil liberties and the rights of vulnerable groups. She is our chief guest. I may also say a few words about our keynote speaker, Dr. Vipul Mudgal. Dr. Vipul Mudgal is an activist, journalist, and a media scholar. He has been editor of Hindustan Times in Jaipur and Lucknow, South Asia editor of the Asia Times, Bangkok, and a BBC journalist in London and Delhi. In the 90s, he was Nehru Fellow in the UK while doing his PhD on media and terrorism. Currently, Dr. Vipul heads the Common Cause, known for its work in police reforms and high-impact PILs. The organization is also one of the 7 partners that has worked to bring about the India Justice Reports in 2019 and 20. Friends, now I invite Professor Bijon Kumar Misra, founder of the Consumer Online Foundation, Patient Safety and Access Initiative of India Foundation, and also editor and publisher of the Aware Consumer magazine, and my dear friend, to chair the proceedings. Vande Matram. Thank you. Thank you, Praful Bhai. Vande Matram. Good morning to all and namaskar. You have taken me back so many years, 1983, 84, when I got involved with the consumer movement. I still recall, and this is a great day for me, Mr. S.D. Shorey, the founder of Common Cause. He was actually a mentor for me. I would be visiting Delhi from Jamshedpur, and I would not return to Jamshedpur without meeting him. I would have to meet him, take his blessings. And I used to get so inspired when I used to see him, because he was, I think, on an average, responding to more than 200 mails every day. And we never had an internet those days. Mm-hmm. He had an assistant who he would dictate the letters, and not a single letter went not responded by him. Let me tell you that. And that was such an inspiring story, because he was also the founder of the Consumer Coordination Council. And today we have the chairman of the Consumer Coordination Council, Dr. P. Ramarao, with us, joining us from Vizag, Andhra Pradesh. Ramarao may not know, but it was Mr. S.D. Shorey who was the first chairman of our Consumer Coordination Council. So, Vipul Bhai, it is so great to have you in this show, because you really fondly took me back to those days when we were struggling to implement the Consumer Protection Act. And today we have a new law called the Consumer Protection Act 2019. But 86 is always very close to our heart, because that was the first journey we started. And I still recall how Mr. S.D. Shorey went before the Supreme Court to make sure that it gets implemented, which was not getting implemented in those days. And Bihar was the only state, because I represented Bihar those days, there was no Jharkhand. Bihar was the only state in the country which established the first Consumer Protection State Council, State Commission. And it started from the veranda of Justice R.N. Thakur in his residence in Patna. Now, those were the days we started this whole, mechanism of prompt redressal to the consumers. And as Praful Bhai mentioned, we are still struggling. We are still struggling to bring that promptness into the justice system. And of course, getting Maya to speak, you all will agree after she has spoken that she is not only knowledgeable, she's an excellent communicator. And I also had the privilege of meeting her around the same time, 84, 85, when Friedrich Neumann Stiftung, the German foundation supported by the Liberal Party of Germany, they agreed to support CCC and establish CCC
in the country to bring in one voice, one umbrella of consumer groups in the country. And that was the time when we were introduced to Maya, and she was even today she's very active in human rights issues. And I'm sure all of you will agree that the subject for today is very, very important. And very important in the sense that she doesn't only talk on creating reports which brings evidences on the table, but it also creates a good tool for advocacy to bring the change. And that is what we are all striving to do. You know, at 12 midnight, past 12 midnight, you know, Professor Ramaiah joining us from US goes to show that, you know, how we have serious people supporting us, serious citizens coming together to take a common cause together for the sake of the country and the people. But we can't become negative or we can't give up. See, the story is we have to dream of Amrit Kal and we have to make it happen. And in order to make it happen, we have to learn from people like Maya and Vipul in terms of how we can sustain this movement, which we started way back in 1983-84. And the beginning was the 86 Consumer Protection Act. So how we can take it forward, sustain it, ensure that it becomes bigger and bigger. And all my friends, you know, like Bina Jainji from All India Women's Conference, you know, a very leading light of women activists in the country, you know, all have joined today to not only listen, but also maybe get some clarity in some of the anxieties which we have in our mind. तो हम हिंदी अंग्रेजी दोनों में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रमैया जी को थोड़ा सा सहूलियत हो जाए अंग्रेजी में समझने के लिए, और हमारे कई दोस्त हैं जो अंग्रेजी में उतने मतलब कन्वीनियंट नहीं होते हैं, तो उनके लिए हिंदी में भी बोलना अनिवार्य हो जाता है और हम लोग को बात करना भी चाहिए. और डॉक्टर साहू वगैरह सारे, मुन्नी कुमारी जी, हमारे सारे आरजेएस परिवार के लोग जुड़ गए हैं और हम उम्मीद करते हैं जुड़ते रहेंगे लोग आज, मतलब जब तक हम लोग इस चर्चा में रहेंगे. Without again spending any more time, as I said, the subject is very important, and my request to Maya and Vipul is that you keep your presentations as short as you can and give more time for question answers, because you see that interactive mode brings in a lot of new dimensions which my participant and my friends have taken a Sunday 11 o'clock to come and join. You can imagine, you know, Sunday meant for family, but every Sunday at 11 o'clock we meet, and today is the 181 episode. So you can well imagine how committed my friends are, and they get away from the family for 1.5 hours to learn from people like you all. So I would start off requesting our chief guest to first address, and then of course keynote, or Praful Bhai, should I go for keynote and then chief guest? I can't hear you. You have to unmute. Yes, Bijanda, please go ahead with the keynote first. Okay, keynote first. Okay. So Vipul Bhai, can I request you to unmute and come and give the keynote address, and then we'll go to the chief guest, Maya, and then we will, you know, open it for question answer and then close the session. We would like to do it by 12:30, the closure. But if there are interesting questions and participants still want that we should continue with the conversation, then we don't mind extending it by a few minutes. So having said that, Vipul Bhai, the mic is yours. Please go ahead and sensitize us and educate us on this India justice system and achieving the consumer satisfaction, which is our topic today. So thank you very much. Both of you have said everything. I agree with every word that you've both spoken. And I mean, it's such a delight. I have known these names, but this is the first time I'm meeting you, even though it is electronically. But I mean, it's a good luck, I would say. And perhaps if
there is a chance, I would like to come over and spend some time with you. And it is a double pleasure, absolutely, that you knew Mr. H.D. Shori, not just the founder, but also somebody who conceived this whole system of public interest litigation in India. And he always spoke for the poorest. And there is a huge synergy between the work of public spirited individuals who work through public interest litigation and the consumer movement. Because I would say that we are an offshoot of the consumer movement of India. And I will try to discuss why policing is also a consumer issue and why it is a service and it should be a citizen-centric service. मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोलूं और जैसा मैंने पहले कहा कि जो कुछ प्रफुल्ल भाई ने कहा, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं शुरू करता तो ऐसे ही करता, यही कहता। वो दो शब्द इतनी सादगी से और इतनी सहजता से और इतने अच्छे कहे, और आपने जो नींव रखी और बहुत कम बोले आप में, मुझे इस बात का अनुमान है कि आप इस विषय पे काफी कुछ बोल सकते हैं, हमसे बेहतर बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने माइक हमें थमाया है तो इसलिए हम बोलेंगे। बाकी कुल मिला के अगर हम शुरू करना चाहें कॉमन कॉज का, मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपको दे दूं, कुछ थोड़ा सा बिजॉन भाई ने बताया आपको। कॉमन कॉज प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ में थोड़ी साफ सुथरी पब्लिक लाइफ हो, उसके लिए काम करता है मोटे तौर पे। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का केस था, या पेशेंट्स राइट टू डाई विद डिग्निटी, लिविंग विल का केस था, जिसे पॉजिटिव यूथनेसिया भी कहते हैं, कि यदि मैं टर्मिनली इल, इस बात की ताकीद मैं स्वयं कर सकता हूं। तो मतलब एक तरह से लिविंग विल, यू कैन कॉल इट सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द पेशेंट, वो हमारे केसेस हैं। ब्लड बैंक का जो बहुत ही रैम्पेंट और बहुत ही खतरनाक व्यापार हुआ करता था हिंदुस्तान में, उसके ऊपर पूरा बैन लगवाने में कॉमन कॉज का काम है। लेकिन हाँ, हमें याद किया जाता है उन केसेस के लिए जो थोड़े पॉलिटिकल होते हैं, वो ज्यादा याद रहते हैं, ये केसेस लोग भूल जाते हैं, जैसे कि सीबीआई के अपॉइंटमेंट्स। तो उसमें हम लोग घुसते हैं इसीलिए कि जब लगता है कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। तो पुरानी सरकार के समय में भी बहुत किया था और इस समय भी किया है। कॉमन कॉज का मोटे तौर पे काम ये है। लेकिन हमारा जो फ्लैगशिप है सर, हम लोगों का फ्लैगशिप है पुलिस रिफॉर्म्स। पिछले 8-10 साल से हम लोग पुलिस रिफॉर्म्स पे काफी तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन शौरी साहब ने जब शुरू किया था, तो जो लैंडमार्क केस है भारतवर्ष में, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें हम भी पिटिशनर थे। हम लोग देयर वर 3 पिटिशनर्स, मिस्टर प्रकाश सिंह, मिस्टर एनके सिंह एंड कॉमन कॉज। तो हालांकि प्रकाश सिंह जी स्वयं इतने जबरदस्त लीडर हैं कि पूरा केस वो खुद ही लड़ते थे, लेकिन वो हमारे बोर्ड मेंबर भी। तो एक तरह से हालांकि बोर्ड उन्होंने बाद में ज्वाइन किया, पहले हम लोग पिटिशनर इसमें बने। तो पुलिस रिफॉर्म्स पे कॉमन कॉज का काम काफी पुराना है। जब माया दारूवाला ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की नींव रखी, तो इन्होंने हमें इनवाइट किया। और माया दारूवाला की खासियत यह है कि ये पूरे देश में ऐसे जितने भी लोग जो साइंटिफिक तरीके से जस्टिस सिस्टम को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, उनको एक मंच पे लाने में माया कामयाब हुई। और ये 4 व्यवस्थाएं जो हैं, कोर्ट का, जुडिशरी, पुलिस का, प्रिजन का और लीगल एड का, इन चारों को मिला के माया ने जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की नींव रखी। हमें बड़ा फक्र है इस बात का कि हम उसके एक तरह से लीडिंग पार्टिसिपेंट्स हैं, और हम लोग काफी इस पे काम करते हैं। माया इसके ऊपर प्रकाश डालेंगी जब वो बोलेंगी। मेरा मेनली आज का काम पुलिस के ऊपर मैं ज्यादा बोलना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग एक रिपोर्ट निकालते हैं कॉमन कॉज, इट इज कॉल्ड द स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट, SPIR. This report is, and now I will talk about what Bijon Bhai said about the consumer movement, why we believe that policing is a service. It is not a service in the same sense as telecom is a service or healthcare is a service, but it is service nonetheless. तो ये जो सर्विस है,
हम चाहते हैं कि ये सिटीजन सेंट्रिक सर्विस बने, लेकिन उससे पहले, और उसके लिए प्रयास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि यदि एक सर्विस है, यदि पुलिसिंग एक सर्विस है और न्याय व्यवस्था एक सर्विस है, तो सर्विस में सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बड़ा आवश्यक है कि जिन लोगों के लिए ये सर्विस है, क्या वो लोग इस सर्विस से सेटिस्फाइड हैं? या उन लोगों की जिन ज़रूरतों के लिए ये सर्विस बनाई गई है, उन ज़रूरतों की पूर्ति ये सर्विस कर पा रही है? अगर ना भी कर पा रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रही है और जिन उद्देश्यों के लिए ये बैठी थी, उसके बिल्कुल उल्टा काम कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है? यदि ऐसा है, तो हम लोग उसमें बहुत एक्टिवली, प्रोएक्टिवली हम लोग उसमें कुछ न कुछ हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो लॉ के थ्रू हो या फिर वो एडवोकेसी के थ्रू हो। यही कर सकते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, या जनता के बीच में अवेयरनेस पैदा करने के थ्रू हो, जिससे कि लोग डिमांड करें कि हमें बेहतर सर्विस मिले। वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें अक्सर ऐसा होता है कि लोग ये कुछ भ्रांतियां ऐसी फैल जाती हैं कि लोग समझ नहीं पाते कि क्या सही है, क्या गलत है। जैसे कि हम देखते हैं जब फेक एनकाउंटर्स होते हैं, तो लोग बड़े ताली बजाते हैं, मालाएं पहनाते हैं जिन लोगों ने लोगों को मौत के घाट गलत तरीके से बिल्कुल झूठे मुकाबलों में मार दिया। वो किसी लेफ्ट, राइट, सेंटर कहीं का भी हो। तो जनता अक्सर भूल जाती है, तो उसकी बीच में भी अवेयरनेस पैदा करना, जैसे आप लोगों ने कंज्यूमर मूवमेंट में अवेयरनेस पैदा की है, उसी तरह से पुलिसिंग में तो ये 3 उद्देश्य को लेके हम लोग चलते हैं। थोड़ी-सी अवेयरनेस हो, थोड़ा-सा ट्रस्ट और सैटिस्फैक्शन का मेजरमेंट हो, और थोड़ा-सा हम ये देखें कि पॉलिसी की दृष्टि से हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो मैं इसमें शुरुआत में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, भारतवर्ष पिछले कुछ सालों से, खास तौर से हम लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हम विकसित देश बनना चाहते हैं। ये एस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर एस्पिरेशन नहीं होगी, तो हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। हमें पता है कि हम वहाँ नहीं पहुँचे। हमें पता है अभी बहुत दूर है, लेकिन एस्पिरेशन तो है मन में। तो हम जो एस्पिरेशन लेके चल रहे हैं कि हमारा देश एक विकसित देश होगा, और विकसित देश का मतलब कि प्रॉस्पेरिटी फॉर इट्स पीपल, सेंसिटिविटी फॉर इट्स पीपल, एक ऐसा देश जो कि जिसमें कम से कम भुखमरी के लिए कोई जगह ना हो, मेल न्यूट्रिशन के लिए कोई जगह ना हो, जिसमें लोग भाईचारे के साथ रहें। तो उसके लिए एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं आज, और यहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूं, कि ये जो स्वप्न है, विकसित भारत का स्वप्न, ऐसा संभव नहीं है कि एक लचर न्याय व्यवस्था के ऊपर ये स्वप्न पूरा हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि सड़कें चमकदार बन जाएं और दूसरी जगहों पे बहुत बड़े-बड़े नियॉन लाइट लग जाए, देखने में लगे वाह कमाल हो गया। लेकिन न्याय व्यवस्था वही कॉलोनियल अंग्रेजों के ज़माने की चली आए। पुलिस जो है वो टूटीकोरिन में तमिलनाडु में 2 पिता-पुत्र को पकड़ के ले जाए, और उनको किस आरोप में, कि उन्होंने अपनी दुकान 6 बजे के बाद खुली रखी थी। पैंडेमिक का टाइम चल रहा था। उनको मार-मार के जान निकाल दी उनकी। तो ये पुलिस व्यवस्था के ऊपर वो स्वप्न पूरा होने वाला नहीं है। तो ये जो a first world cannot be created on the foundation of the completely archaic and backward looking justice system. तो justice system विकास की भी आत्मा है, और आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार के जस्टिस सिस्टम की आवश्यकता है। हम लोग ये कहते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि जिन देशों में पुलिस अपना काम नहीं कर पाती, या पुलिस लचर होती है, पुलिस कमजोर होती है, पुलिस जहां उसको इफेक्टिव होना चाहिए वहां नहीं हो पाती, तो उसको हम लोग फेल्ड स्टेट कहते हैं। जहां पे कि आतंकवादी संगठन आ गए ऊपर, तरह तरह के लोग जो है जिनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए एक सभ्य समाज में, उस तरह के लोग अगर उठने लगे और पुलिस उनको ना दबा पाए, तो ऐसा हम लोग कहते हैं कि ये फेल्ड स्टेट हो गया, फेल्ड स्टेट। और उसके विपरीत अगर हम देखें कि अगर ऐसी स्टेट होती है जहां पर कि पुलिस का मनमानी चलती है और पुलिस जो चाहे करती है,
तो उसको भी हम लोग पुलिस स्टेट कहते हैं। तो जो पुलिस स्टेट होती है वो भी उतनी ही खतरनाक होती है जितनी की फेल्ड स्टेट होती है। तो हम ये चाहते कि पुलिस इनइफेक्टिव हो, और ना हम ये चाहते कि पुलिस इतनी ज्यादा ताकतवर हो कि पुलिस ही चला रही हो पूरी व्यवस्था को। तो उसके बीच का जो बैलेंस है, देखिए, जो एक कहना बड़ा आसान है, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में जब हम कहते हैं तो फेल्ड स्टेट में देयर इज अ गैप ऑफ लेजिटिमेसी, पुलिस स्टेट में भी देयर इज अ गैप ऑफ लेजिटिमेसी। वैधता, जो तंत्र की वैधता है, वैध नहीं है, लेजिटिमेट नहीं है। जैसे कि इलेक्शन से, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन से लेजिटिमेसी मिलती है पूरे सिस्टम को, उसी तरह से एक बैलेंस्ड अप्रोच से पुलिस की बैलेंस अप्रोच से न्याय व्यवस्था को एक लेजिटिमेसी मिलती है। और ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए समझना, क्योंकि पुलिस इज द फर्स्ट फेस ऑफ द जस्टिस सिस्टम। जब हम देखते हैं जो भी कुछ हमें नजर आता है जस्टिस सिस्टम, उसकी आत्मा हमें नहीं दिखाई पड़ती, जूरिस्प्रूडेंस हमें नहीं दिखाई पड़ती। हमें जो दिखाई पड़ता है वो थानेदार दिखाई पड़ता है, सिपाही दिखाई पड़ता है। तो वो व्यवस्था है, वो काफी, उसका सीधा सीधा संबंध इसके साथ है कि आप किस प्रकार की लेजिटिमेसी अपने सिस्टम को देना चाहते हैं। दूसरा, थोड़ा सा मैं एसपीआईआर प्रोसेस के बारे में आपको बता दूं कि जब ये शुरू किया था तो हमने कोशिश की थी कि सिटीजन्स का जो ट्रस्ट है पुलिसिंग में और सिटीजन्स का सेटिस्फैक्शन जो है पुलिस में, उसका हम मेजरमेंट करें। तो बिजोन भाई, आप जो कंज्यूमर मूवमेंट में अक्सर मेजरमेंट करते हैं कि चीजें ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही, ये थोड़ा सा इनटेंजिबल एरिया हो जाता है। इसमें आप मतलब ये कर पाना कि आप पूरी तरह से, क्या कहना चाहिए, एक तरह से बड़े ही व्यापक ढंग से और गंभीरता के साथ कहें नहीं ये ऐसा ही है, तो उसके लिए मेजरमेंट में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कई प्रकार की स्टडीज हम लोग करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो भारत के बड़े स्टेट्स हैं, कम से कम 22 बड़े स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनमें से कम 2-3 स्टेट्स, और पूरे भारत का इसमें आकलन हो। तो उसमें हम CSDS करके एक संस्थान है, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, आप लोग जानते हैं बेहतर तरीके से क्योंकि आप रजनी कोठारी जी को जानते थे, और वो उन लोगों ने शुरू किया है। और वो लोग 1952 से अब तक सारे इलेक्शंस का मेजरमेंट करते हैं, और कभी सही कभी गलत, मेरे ख्याल ज्यादातर सही रहते हैं, लेकिन फिर भी अभी तो बहुत सारे लोग आ गए हैं करने के लिए। तो इसमें हमारा जो हम सर्वे कराते हैं पूरे देश में, उसमें हम एमफिल के और पीएचडी के स्टूडेंट्स को यूज करते हैं ज्यादातर। तो उसमें वो लोग नहीं है कि जो सर्फ के लिए या जो सोप्स के लिए और वॉशिंग पाउडर के लिए जो पूछते हैं जाके कि अच्छा लगा बुरा लगा। ये बहुत व्यापक तरीके से ट्रेनिंग के साथ में हम लोग सर्वे करते हैं। तो इसमें सर्वे में कुछ जो फाइंडिंग्स हैं वो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। इसलिए बताऊंगा कि वो मेजरमेंट के ऊपर आधारित हैं, और ये कहना बहुत आसान है, मतलब हम कोई अगर कथन हम चाहें किसी पे जोर देना और कहना चाहें कि जैसे कि हम चाहते हैं कि पुलिस शुड नॉट वर्क फॉर द रूलर्स ऑफ द डे, हाउएवर गुड दे मे बी। Police should work for the system, and they should not become the private armies of politicians in power. Now, it's all good. But the fact is that how much are they actually becoming the private armies of those rulers of the day? जहां आप दिल्ली से बाहर जाते हैं, बिहार की तरफ जाते हैं, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जाते हैं, या आप बिल्कुल इंटीरियर भारत में जाते हैं, तो अक्सर ये देखा जाता है कि पुलिस खुलेआम जो है रूलर्स ऑफ द डे के लिए काम कर रही होती है। और तो हमने इसमें जो सबसे पहला वो देखने की कोशिश की वो ये था कि पुलिस किसके लिए काम, मोटे तौर पे जब जनता का पुलिस के साथ में सामना होता है, तो हमने ये पाया कि करीब 82% रेस्पोंडेंट्स ने हमें ये बताया कि पुलिस से उनका कोई कांटेक्ट पड़ा ही नहीं। पुलिस से जो डायरेक्ट कांटेक्ट जिन लोगों का पड़ा वो करीब 13-14% लोग थे, और उनमें से भी बहुत सारे ऐसे थे जिनका ट्रैफिक के चीजों को लेके पड़ा। तो उसके अलावा जो 80% 82% लोग जो हैं, उनका पुलिस के बारे में जो सोचना समझना है वो किसी ना किसी रूप से सेकंड हैंड है।
वो दूसरे लोगों का, अपने जान पहचान के लोगों का, अखबारों का और उनकी जो सोच है उसके ऊपर आधारित उनकी सोच हो जाती है एक प्रकार से। तो हम ये देख रहे हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि पुलिस को खुद कांटेक्ट करते हैं और ऐसे कितने लोग हैं जिनको पुलिस कांटेक्ट करती है। नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक तरीका है देखने का कि अगर तो मैं पुलिस को कांटेक्ट करता हूं, सीधा मैं थाने में पहुंच जाता हूं, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं प्रभावशाली व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं पुलिस, मुझे विश्वास है कि पुलिस मेरा काम करेगी। अगर पुलिस मेरा काम नहीं करती तो मैं मीडिया के पास भी जा सकता हूं, मैं कोर्ट में भी जा सकता हूं। तो पुलिस के पास जाने वाले लोग, इतना तो होता है कि उनका कोई व्यवस्था में थोड़ा बहुत विश्वास होता है। लेकिन जिन लोगों के पास पुलिस जाती है उसमें हम देखें कि ये कौन से लोग हैं, तो ऐसा पाया जाता है कि ज्यादा स्लम ड्वेलर्स उसमें होते हैं और कमजोर वर्ग के लोग ज्यादा होते हैं उसमें। तो जैसा प्रफुल्ल भाई आपने शुरू में कहा था कि हम ये देख रहे हैं कि क्या कमजोर वर्गों के लिए वही पुलिस अचानक एकदम बदल जाती है और कमजोर वर्ग के लिए अलग तरह से एक्ट करती है, और जो पढ़े लिखे और थोड़े से बेहतर जो रख रखाव के लोग हैं उनके लिए अलग करती है। तो हमने ये पाया कि द पुअरेस्ट are nearly twice as likely to have been contacted by the police than the rich. अगर आप गरीब हैं तो इस बात की संभावना दोगुनी ज्यादा है कि पुलिस आपके घर आ सकती है, बजाय इसके कि जब आप थोड़े से संपन्न हैं। तो ये मिडिल क्लास, लोअर क्लास में, इसमें बहुत ज्यादा, इसमें बहुत अंदर इंटरेस्टिंग बातें हैं, लेकिन उसको मैं छोड़ूंगा अभी। कभी आगे आवश्यक होगा या प्रश्नोत्तर में आएगा तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। इसके अलावा हमने देखा कि ट्रस्ट एंड सेटिस्फैक्शन, अगेन बिजन सर, ये जो है एक तरह से कंज्यूमर इश्यू है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ ट्रस्ट of common people in the police, what is their level of satisfaction in the police, and then we find अब इसमें 65% लोग पुलिस से satisfied हैं। अब ये कहना थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन जब आप उनसे डायरेक्टली नहीं पूछते क्या आप पुलिस से संतुष्ट हैं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये होता है कि यदि आपको रात को 10 बजे थाने में जाने की जरूरत पड़ी तो क्या आप जाएंगे? क्या आपने, आपके जान में किसी आदमी के साथ ऐसा हुआ या ऐसा नहीं होना चाहिए? बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, अ बैटरी ऑफ क्वेश्चंस इज आस्क्ड, समटाइम्स 20-30 क्वेश्चंस डायरेक्टली इंडायरेक्टली आस्क्ड, एंड देन यू कम टू अ कंक्लूजन अबाउट ट्रस्ट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द पुलिसिंग। सो दीज आर थिंग्स अबाउट सर्वे। तो हमारे सर्वे के जो क्या कहना चाहिए, सर्वे सर्वा है सर, वो सुहास पलशीकर, प्रोफेसर सुहास पलशीकर पुणे में रहते हैं, और एक संदीप शास्त्री जो कि बेंगलोर में रहते हैं, वाइस चांसलर हैं। तो ये लोग बड़े सर्वे के जानकार हैं, तो ये हमारे एडवाइजर के रूप में काम करते हैं। तो उसमें जब हम ये देखते हैं कि 65% लोग पुलिस से सेटिस्फाइड हैं, तो दिस इज कंसिस्टेंट विद द ग्लोबल सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द पुलिस इन द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। 62, 63, 70 ऐसे रहता है करीब करीब। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो लोग जो डिससेटिस्फाइड हैं, यानी कि रिमेनिंग 35% पीपल, उनका वो कौन लोग, तो उसमें हमें पता लगता है कि सबसे ज्यादा मिसट्रस्टफुल ऑफ द पुलिस आर द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया। तो हमें अक्सर मेजॉरिटी माइनॉरिटी का काफी ख्याल रहता है कि भाई मेजॉरिटी के लोग ज्यादा खुश रहते हैं, माइनॉरिटी कम रहते हैं। लेकिन हमने देखा मेजॉरिटी माइनॉरिटी के साथ भी अलग से किया, हमने महिलाओं के साथ भी अलग से किया, SC, ST और अपर कास्ट हिंदूज का फिर बाद में जो सेग्रीगेशन होता है, जो आप जानते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में कॉमन है वो तरीका। तो उसमें हमने देखा कि सबसे ज्यादा मिसट्रस्टफुल अबाउट द पुलिस एंड परहैप्स द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड बाय द पुलिस आर द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया। और उसके बाद SC, OBCs और मुस्लिम्स डिस्ट्रस्टफुल ऑफ द पुलिस। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ये अच्छी बात है कि 65% लोग पुलिस में से मोटे मोटे तौर पे डिससेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन जब हम यही देखते हैं कि कमजोर तबकों में और स्लम ड्वेलर्स में जब हम जाके देखते हैं तो यही डिससेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ने लगता है और काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस के अंदर इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन कैसा है।
SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज एंड विमेन, अगर मान लीजिए इनको हम मोटे मोटे तौर पे कमजोर तबके समझ लेते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि 19 out of 22 states of India have under representation of scheduled caste. तो जो उनकी जनसंख्या है उससे काफी कम उनका रिप्रेजेंटेशन पुलिस में है, शेड्यूल कास्ट का। इसी तरह से 16 out of 22 states ऑफ इंडिया, भी इसमें काफी आंकड़े हमारे पास हैं, लेकिन वो उसमें मोटे मोटे बिग पिक्चर की बात हम लोग कर रहे हैं। तो एसटीज का भी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है पुलिस के अंदर, और 13 out of 22 states में ओबीसीज एंड representation of women, this breaks your heart that 22 out of 22 states, the representation of women is nowhere close to what it should be. Their own benchmark of BPRND is about 30%, and Maya will talk more about that. So, तो अब हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ डिससेटिस्फेक्शन इनका पुलिस में ज्यादा है, शायद अगर इनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो तो शायद उनका डिससेटिस्फेक्शन कम हो। लेकिन हम एक चीज और देख रहे हैं कि जब हम प्रिजन्स में देखते हैं तो SC, ST, मुस्लिम्स, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी कि अभी हम देखा हमने कि जो the representation of the weaker sections and the minorities within the police force is lower, but their representation inside the jails is much higher. Now, if you are, you know, a lower level police officer, constable, किसी को बोलो, वो कह देगा कि सर ज्यादा करते होंगे अपराध इसलिए ज्यादा है ये लोग अंदर। लेकिन ये मानना बड़ा मुश्किल है कि अपराध जो है वो ट्राइबल्स ज्यादा करते हैं। वो हमेशा अंग्रेजों के टाइम में भी ट्राइबल्स को अपराधी माना जाता था, और बल्कि तो ये ऐसा हम ये देख रहे हैं कि अंडर रिप्रेजेंटेशन इन द फोर्सेस एंड ओवर रिप्रेजेंटेशन इन द प्रिजन सिस्टम। नाउ दिस टेल्स अस समथिंग। हम इसको थोड़ा सा अब नीति निर्धारक कैसे दूर करेंगे, क्या करेंगे, वो उनका देखने का काम है। दूसरा ये है कि जब हम डिस्पोजल ऑफ केसेस को सर देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण जो बड़े बड़े वो हैं मसले, सिर्फ मैं वो आपके सामने ला रहा हूं। हमने देखा कि अच्छा, इसमें से बहुत सारी चीजें ये सर्वे पे आधारित नहीं है कि खाली आपका परसेप्शन गिन रहा है, ये एक्सपीरियंशियल भी है बहुत सारी, कि जिनका अनुभव है डायरेक्टली, या जो जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं या मुकदमे चल रहे हैं, या उस तरह के लोगों से भी बातचीत की है, या पुलिस वालों से स्वयं से बातचीत की गई है, तो वो एक पूरा उसका सिस्टम है जो मैं आपको बता दूंगा। तो डिस्पोजल होता है जब केसेस का, तो डिस्पोजल या तो पुलिस करती है, कभी फाइनल रिपोर्ट लगा देती है, कभी कोई नहीं मिला और उसके ऊपर डिस्पोजल कई बार पुलिस के द्वारा भी हो जाता है। बहुत अगर नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं उसमें बेल भी मिल जाती है पुलिस के द्वारा। तो और डिस्पोजल अन्यथा कोर्ट के द्वारा होता है, और कोर्ट जो डिस्पोजल करता है केसेस का, उससे हम मोटे तौर पे अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से हो रहा है। तो हमें ये उम्मीद थी जब हम ये सर्वे कर रहे थे और जब हम अध्ययन कर रहे थे बीपीआरएनडी का, एनसीआरबी का और दूसरे आंकड़ों का जो हमारे पास ऑफिशियली उपलब्ध है इंडिया में, और कोर्ट के आंकड़ों का, एनएचआरसी, एसएचआरसी, सबके आंकड़ों का, तो हम ये सोच रहे थे कि बच्चों के खिलाफ जो केसेस होते हैं, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, वो शायद कोर्ट चाहते होंगे जल्दी खत्म हो जाए। सबसे देर से हमारे यहाँ निपटारा उन केसेस का होता है जिसमें महिलाएं और बच्चे होते हैं। और जो कॉग्निजेबल केसेस, ऑल कॉग्निजेबल केसेस का जो डिस्पोजल रेट है, उसके मुकाबले एससी, एसटी का और चिल्ड्रन का डिस्पोजल रेट बहुत ज्यादा है। यानी कि उनके केसेस ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं। तो जितने कमजोर आप हैं उतना ज्यादा टाइम न्याय, ये तो बात सही है कि न्याय व्यवस्था बहुत टाइम ले रही है, ये भी बात सही है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। लेकिन अगर हम इन केसेस को कमजोर वर्गों के दृष्टि से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि दिस इज द पुअरेस्ट, दीज आर द शेड्यूल्ड कास्ट, दीज आर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दीज आर आल्सो children in conflict with law, and a large number of them are slum dwellers. तो बाकी मैं इसको समाप्त करूंगा बस ये कहते हुए कि हमने ये भी देखा कि पुलिस की एडिक्वेसी क्या है, पुलिस जो हम भारत में कितनी कैपेसिटी पे काम करते हैं। क्योंकि सर आपने जब शुरुआत की थी तो आपने यही कहा था कि वी वांट टू इंप्रूव द कैपेसिटी ऑफ द जस्टिस सिस्टम। आई थिंक इट्स अ कैपेसिटी इशू दैट हाउ वी
look at the policing from the point of view of how much of their capacity is being utilized. So in terms of personnel and in terms of the sanctioned capacity of people in the police or the personnel in the police, we find that the entire country, the police work at around 77% of their capacity, यानी कि 2/3 में. और ज्यादातर जगह पे ये पाया जाता है कि वैकेंसीज बहुत ज्यादा रहती है. तो ये एक एफिशिएंसी का इश्यू है कि ऐसा कैसे हो सकता है. अगर आपको जजेस नहीं मिल रहे तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप कुछ को नियुक्त करके रिजर्व में रखें? क्या आप ऐसा कर सकते हैं तमाम आपके यहाँ ट्राइब्यूनल्स हैं उनका कुछ तेज कर दें कि कुछ ट्राइब्यूनल से यहाँ आ जाएंगे? आप कुछ तो ऐसा करिए कि 5% 10% रहे. वैकेंसीज का रेट जो है वो 30%, 35%, कई जगहों पे 40% तक है. और हम ये भी देख रहे हैं लगातार कि हमने पुलिस कर्मियों से बातचीत की, खासतौर से सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और उससे नीचे के जो लोग जिनको हम आईओस कहते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं. तो उन्होंने ज्यादातर बताया कि हमारे पास करीब 60-65% केसेस में जबरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर रहता है. बड़े लोगों को लेके कोई भी केस होता है तो पॉलिटिकल प्रेशर और डिपार्टमेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है इन्वेस्टिगेशन में. और अक्सर ऐसा पाया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन के बीच में, देखिए, अगर विटनेस भाग जाए और विटनेस इज अनविलिंग टू कोऑपरेट, वी कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज विटनेस परहैप्स डज नॉट वांट हैरेसमेंट. बट व्हाट अबाउट द विक्टिम हिमसेल्फ? मैं हूं, मैंने केस दर्ज किया है और मैं ही भाग रहा हूं, मैं कोऑपरेट नहीं कर रहा पुलिस के साथ. तो ये जो संख्या थी, विक्टिम अनविलिंग टू कोऑपरेट, वाज 58% केसेस में, जो खुद ही लिखाने, मतलब तो ट्रस्ट का डेफिसिट इतना ज्यादा बढ़ रहा है पुलिस के बीच में, और जो डिपार्टमेंटल प्रेशर और पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि पुलिस अपना काम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही. तो अंत में सर, लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो वायलेंस के प्रति पुलिस का जो एटीट्यूड है और जो जनता का एटीट्यूड है, वो बहुत ही चिंताजनक है. हमने पुलिस कर्मियों से थानों में जाके और बैठ के बातचीत की. उसके बाद हमारे एडवाइजर्स ने कहा कि आप घर पे भी जाइए और उनसे एक अच्छे माहौल में ऐसे बात कीजिए जैसे आप, मतलब उनसे जानना चाहते हैं कि सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाए. तो उन्होंने बड़ी सादगी से, बड़ी ईमानदारी से कहा कि भाई कोर्ट वोर्ट जाने की क्या जरूरत है, मारो पीटो और छोड़ दो. तो फिर हमने इसका मेजरमेंट किया कि कितने लोग ऐसा चाहते हैं. तो हमें ये पता लगा कि 20% के आसपास लोगों ने ये कहा कि अगर खतरनाक अपराधी है तो उसको उड़ा दो, उसको फेक एनकाउंटर मार दो, कोई बात नहीं. तो भागलपुर के समय में जो हुआ था, लोगों की आंखें निकाल दी, उसके बाद से क्या बहुत ज्यादा प्रगति हुई है? मुझे ऐसा नहीं लगता, और वो बहुत ही चिंताजनक बात है. और अगर जनता से वही प्रश्न पूछते हैं, और हमने बहुत घुमा फिरा के सवाल पूछे, पहले मोटरिस्ट के बारे में पूछा कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के, ऐसा लग रहा है आपको, बहुत खतरनाक तरह से कार चला रहा था और उसने एक्सीडेंट कर दिया और बच्चा बहुत लहूलुहान हो गया, तो क्या उसको मारपीट करना ठीक है? इस तरह से पूछे. फिर 2, 3, 4 सवाल और अन्य पूछे. सड़कों पे नहीं, दूसरी चोर को पकड़ लिया तो क्या करना चाहिए? फिर उसके बाद पूछा, अगर काऊ विजिलेंटे, अगर मान लीजिए कि लग रहा है कि गाय लेके जा रहा है, शायद इसे काट देगा, तो क्या उसको मार देना वहां पे सड़क पे ठीक है? तो पता लगा कि लोग जो हैं, आम जनता, इस बात से उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी लग रहा है तो उसको वहीं के वहीं सजा दे दी जाए. तो ये पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में कुछ फाइंडिंग्स हमारी हैं. हमारी रिपोर्ट्स जो भी देखना चाहें वो commoncause.in एक वेबसाइट है, सारी रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में, और आपके फीडबैक का हमें बहुत एक्सीलेंट. थैंक्स अ लॉट विपुल भाई. थैंक यू सर. विपुल भाई, आपने ऐसे ऐसे आंकड़े लाए हैं, हम सोचते हैं, प्रफुल्ल भाई विल आल्सो एग्री, एंड आरजेएस परिवार, RJSN, सब लोग एग्री करेंगे कि हम लोगों को तो हर महीना इस पे एक चर्चा रखना पड़ेगा, फिर भी कम पड़ जाएगा. क्योंकि इस ढंग के आप आंकड़े लाए हैं, इस ढंग के प्रश्न हम लोग के अंदर आ रहा है, हम ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसका एक सीरीज बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम लोग लाइफ में पुलिस रिफॉर्म्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर द पिलर्स ऑफ
our strength, the citizen का जो strength है, वो a good, responsible, credible police system ही ला सकता है, that विश्वास. तो हम सोचते हैं कि कई प्रश्न हमारे माइंड में भी आ गया है, कई हमारे परिवार के लोगों के अंदर भी आ गया होगा, और उसको आप प्लीज रोक के रखिए. हम लोग एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन जरूर रखेंगे, बिकॉज आई कैन नॉट बट वेट नाउ टू लिसन टू माया. एक ग्राउंड तो बन गया, अब आप हम लोग को बताइए कि आपका जो अनुभव रहा और आप जो रिपोर्ट ला रहे हैं, and Indian justice system achieving consumer satisfaction जो theme है आज का. You see, we would love to hear from you now, and please let us hear from you in whatever manner you want to treat the subject, and the mic is yours. Please unmute and come, and we would like to keep also some time for question answer session with both of you. So thank you very much. Maya, please unmute and come. You have to unmute your mic and come. Backend team, unka mic, she's not able to unmute, she's saying. I can unmute now. Thank you. Bijan Bhai, thank you so much. Mr. Sheth, thank you also very much, and all the eminent people who are here. It's a real opportunity for me to present the India Justice Report, and it will take us a little bit broader about the Nyaya Pranali, the justice system, than Vipul has talked about. Vipul बहुत विस्तार से police reform के बारे में बात किया है, a matter which is very close to my heart, and which I would wish the whole country would get together and start talking about police reform. And one of the mottos जो हमने शुरू किया था बहुत साल पहले, लेकिन किसी ने, जैसे कि आपकी जागो ग्राहक जागो सब जगह फैल गया है, हमारा जो छोटा सा नारा था वो फैला नहीं, which was police reform is too important to neglect and too urgent to delay. लेकिन यही हम कह सकते हैं in relation to the न्याय प्रणाली, यही हम कह सकते हैं in relation to the broad aspect of justice system. I would like one of your colleagues to please tell me after 15 minutes is over. Okay? I'm doing that. I've been made to do that. Yeah, but, please. So feel free to please stop me. I will do that. Thank you very much. I will take you straight to the justice report, क्योंकि justice के बारे में हम ग्राहक हैं. The general public is the grahak. It is not only a need. We want it to be a need, like education, like food. Why is justice not a need? Because justice is certainly a right in a democratic country, and that is why we created this report. क्योंकि हम ज़्यादातर जब भी हम justice प्रणाली के बारे में बात करते हैं, हम बहुत ज़्यादा आलोचना करते हैं. आपने पुलिस के बारे में तो सुना ही है. You have heard about the police, but you will also hear about the court cases. When you have 40 crore cases pending, nothing to do but to complain. But we wanted to go beyond that. As a group of people, आपने सुना है कि we are 6 or 7 of us. उनके नाम आपके सामने. Please, I hope somebody has put up the PowerPoint. Yes, ma'am. I would like to request to share my screen, please. Then I can share the presentation. You can now. Thank you so much. We are on slide number 1. Can you all see slide number 1? Yes, we can see now. So I don't really want to see it. I want my own. How can I do this? One second, please.
I was looking for my own notes actually, Nayanika. So if you're You sharing, can look at the screen. You can look at the screen. It is I can being look. reflected on the screen. All right, thank you. So basically, why did we make this report? Now we are in our third edition of this report, and we also have state reports. So what did we look at? Please go to the next slide. We looked at police, prisons, judiciary, and legal aid. These are the 4 pillars of the justice system. There are also other pillars like prosecution, like forensics, that we are already beginning to look at in our next reports. We also looked at the state human rights commissions because we wanted to see कि ये जो न्याय प्रणाली है उसकी क्षमता क्या है. हम लोग आलोचना तो करते हैं लेकिन क्षमता कभी देखते हैं? Do we ever look at the capacity of this system to actually deliver? So then we started to see this, and what did we started to look at? In the police, we started in the police, prisons, judiciary, legal aid. We started to look at budgets. आपके पास पैसे हैं? Have you got enough money to actually work? Do you have enough human resources, people? Do you have enough women? Do you have enough men? Vipul talked about vacancies. 23% vacancies in the police means that you are working at 2/3 the capacity. Elsewhere, you may be working at 60% less. So we wanted to look at that, at vacancies. We wanted to look at the infrastructure. If you have judges and if you have manpower, do you have courts? Do you have places where the public can go to in the taluka level, where they can go to and say कि भाई मेरा जो complaint है ऐसा है? Do I have to go all the way from the taluka to the district headquarters? Have I got the capability to go to the district headquarters? मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी district headquarters to complain about domestic violence? So we were looking at that kind of thing. Workload. When you say workload, the first thing that comes to your mind is that you have 40 million cases pending. 40 million cases pending for how many judges? Our judges' vacancies run to about 20-25%. And there is a difference between actual strength and sanction strength. Sanction strength आपका 100 होगा, actual strength आपका 75 होगा, and even the sanction strength is not sufficient to satisfy the need of the public. Then we looked at diversity. क्योंकि हम democracy है, हम कोई तानाशाही nation नहीं है अब तक. हम तो अभी democratic nation है, liberal है, inclusive है. तो inclusive में caste भी होना चाहिए, representation in the justice system, औरतों का भी होना चाहिए, दूसरे genders का भी होना चाहिए, diversity of profile भी होना चाहिए, diversity of experience भी होना चाहिए. तो ये सब है क्या हमारे पास या नहीं है? और इससे होता क्या है? When you have no diversity, supposing you had 100% Brahmin men or 100% Dalit women, then would you have the capacity to deliver justice in the way that you should deliver justice? Finally, we looked at trends. Last year, 5 years ago, trends क्या थे? कोई खास trends थे? और हमें ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं और हम उसके बाद कर सकते हैं. That is why we created this report, ताकि going from complaining to going from participating. Mr. Sheth said कि we must look to see as a gharak, what is it that we can participate in? How can we make the system better? First, we must know the facts about the system, then we can participate.
One of the major things we have done in this report, and I want to emphasize it, is we use data, but we don't use any private data. We don't use any data that is created by NGOs. We create data we use data that is created by the government to mirror back to the government that what we are saying is what they are saying. हमारा जो बहस है, हमारी जो चैलेंज है, हमारी जो डिस्कशन है, वो सारे ही इसी पे बेस्ड है जो कि आप कह रहे हैं, ताकि there is a level playing ground. जो आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो आप ही के और एक आईना है, एक मिरर है. So we have a level playing field, we have a common basis for discussion. There are two common bases for discussion in this country, जो कि लोग underutilize करते हैं. One is government data, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे improve कर सकते हो, चाहे झूठ बोल रहा हो, चाहे सच बोल रहा हो, we can depend on it because it is government data. The second thing which is underutilized when we are talking to the government and trying to participate in our own democracy, जैसे कि ग्राहक करता है, is law. Now, ग्राहक जो है, the movement, the consumer movement uses the law a great deal. And this is a really good thing. When we go to court, we are not going to court to challenge the government. We are going to court to participate in our own democracy, to engage in the only way allowed to us. Violence is not allowed to us. But the court system is open to all. And that is why everybody must know the law to use the law. So this is also a public education tool. And we have noticed that after we have published this tool, many more writers in the media are using our data and other data and basing their argument and their challenge on data, on the legal system, which was never done before. So please move to the next slide. So what did we find? Before I tell you how we did the ranking, etc., what did we find? One of the major USPs, the universal selling point of this report, is that it looks at ranking. And I will come to that in a minute. But what did we find? We found something that most people know anecdotally, but don't have the argument to make forward. And we found the participation of women across the justice system is very low. Less than 10% if we look all across the justice system. More in some cases, like in the judiciary, in the lower judiciary, बहुत बेहतर है कि there is a participation of women up to 30%, even in some states up to 50%. But by and large, if you look at policing, if you look at prisons, if you look at legal aid, women are less than 10% or a little bit more than 10%. But even where they are less or more than 10%, they are always in the lower half. जो आप subordinate courts में देखेंगे, बहुत अच्छे numbers आते हैं, आंकड़े बहुत अच्छे हैं. As soon as you go to the High Court, numbers drop, fatally drop. And by the time you get to the Supreme Court, तो है ही है नहीं. 10% हो, अभी बहुत कोशिश करके, और because the government, because the public is saying and the women's movement is saying, तो थोड़ा कुछ improvement हुआ है. Some improvement has been there. Now prisons को किसी की, ना तो government ना तो public police की prisons की ओर देखता है. They don't look at prisons at all. Prisons is an extremely neglected area. Lowest budgets are in prison. Least spending is in prisons. But let's look at the occupancy.
the occupancy is becoming a scandal nationally and internationally. Nationally कोई बात नहीं करता, लेकिन internationally India's standing becomes very poor when you say that 130% is the occupancy rate. That means 30% over the 100. And yet we are a country with a low incarceration rate. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है या तो there are too many arrests, या तो bail नहीं मिल रही. और कौन? Who are these 130%? They are 99% among the poor, 99% among the most vulnerable, and 77%, which means that 2/3 of the whole population that is in prisons is awaiting trial. या तो चार्जशीट नहीं हुआ है, या तो रिमांड पे है, या तो बेल नहीं मिल रहा है, या तो कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है, या तो लीगल एड नहीं है. तो इसका मतलब है कि फेलियर ऑफ द सिस्टम, होल सिस्टम. जुडिशरी सुन नहीं रहे है. लीगल एड आपको लीगल एड नहीं पहुंचा सकती. बेल जो देना चाहिए वो बेल नहीं मिलती. So it is a total failure of the system when 77% are waiting trial. और जो trends में हमने देखा है, what we have seen in the trends is that the wait is getting longer. The people waiting for bail are more, even though many people are given bail. There is a certain segment that cannot get it, and nobody is doing anything about it. Or if they are trying to do anything about it, 10 years have gone by and nothing much has happened. It is interesting to note that during COVID times, there were 7 lakh more people arrested than in normal times. What does it say about policing? These are questions that the India Justice Report is throwing up for debate. We are not the end. We are the beginning of the conversation. People always say, आप लोग outcomes के लिए नहीं देख रहे. नहीं, हम अभी outcomes को नहीं देख रहे. क्योंकि outcomes, हमारे outcomes क्या है? हमारे outcomes है, what are our outcomes? Our outcomes are prashan, public questioning. Public must start asking these questions and not stop with complaining and hand-wringing. We were talking about vacancies. Nationally, correctional staff vacancies, दो किस्म के staff होते हैं in prisons. एक होता है guarding and security staff, and दूसरा होता है correctional staff, rehabilitation को देखने वाले, bringing bail, getting prisoners legal aid. ये होते हैं correctional staff. Probation officers, ऐसे 40% vacancies है इसमें. तो एक तरफा हम कह रहे हैं, one way we are saying that our policy is not jail as a revenge motivation, but jail as rehabilitation, reintegration into society, reconciliation with the public. ज्यादातर crimes जो होते हैं, very heavy crimes नहीं होते हैं, heavy अपराध नहीं होता है. It is petty crimes, theft, afraid, these kinds of things. I have 15 minutes. Okay, I will take another 7 minutes. Is that okay? 5 minutes. 5 minutes. Okay, sure, 5 minutes. So we have this, and yet we have a policy that has 40% vacancies in the very place where you need it. When you get to doctors, you get places, you get states with 60%, 70% vacancies, so that there is only one doctor for 16,000 people. My God. Naturally, you are going to get ill health and deaths in prison. Judge to population ratio stands at 19 judges. In the Malimat report, 50 years ago, in the National Commission report,
50 years ago, there should be 50 judges for the population. Now the population has increased hugely, but the ratio of judges is 19 judges. You are asking 19 judges per lakh population to get rid of cases which have been pending for years. But how are you going to do this if you don't increase the budgetary allocation for the whole justice system? Please move now to the next slide. You will want to know, if you are doing ranking, who came first, who came second. In the first two reports, Maharashtra, I believe, Maharashtra came first, but suddenly it dropped to 11th. In this last report, Karnataka has come first, Tamil Nadu second, Telangana third, Gujarat and Andhra Pradesh fourth and fifth, and Kerala sixth. Now here is a pattern. Except for Gujarat, all these states are southern states. My question is, why? Why have they come first, second, third, fourth, fifth? There is in Gujarat stable government, the same government for 13, 14 years. At the same time, Karnataka and the other southern states, they have got stable governments, not the same one, but stable governments, and regular improvements in governance, not merely in judiciary or the justice system, but in governance. Overall governance is good or better than most other states. There is less conflict, there is less social unrest, and therefore you have this. Madhya Pradesh, again, a long-standing state with long same kind of government. New states and states that have been stable. Why did Maharashtra fall so much? If you look at the same period, you will look at instability also. Now, lastly, I want to say, please go forward. I'll leave this part out and we can answer questions on it. Please go further. This is just to give you an amusement. What is the reality and what is policy? Policy says in the police there must be 33% women. But the recruitment policy is such that if there are 33 vacancies, only 3 will be given to women, or 9 will be given to women. Therefore, they will never catch up. In Madhya Pradesh, it will take you 180 years to fill that quota. I mean, look how ridiculous it is. In some of the best states, Tamil Nadu will take 14 years. Now, amazingly, Bihar, with the new policy that they have set in place, will take only 3 years. But it will not be possible. This is just the Ankara. It will not be possible because the institutions have not accommodated themselves to accept women. जब आपको औरत होती है, जब औरतें होते हैं, they are not men. They are biologically different. Therefore, you have to have uniforms, you have to have bathrooms, you have to have restrooms, you have to have creches. ये सब चीजें जो आप नहीं डालेंगे, if you won't have those things, then you won't get the women. Or if they come, they will leave. Please move forward. This is about court cases. This is how long it will take to reduce. These are the courts and how they are reducing cases which are over 5 years. This is the number of cases which are over 5 years. Now, you can reduce cases that have to do with motor accident vehicle, but you can't make a case in 5 minutes which has to do with land or which has to do with something else. So I can answer the question that Mr. Sheth posed, that what is it that we can suggest to reduce these cases? But it's a longer conversation. And Bijon, I hope that when you create this conversation about policing, you also create a conversation about the justice system as a whole.
The police cannot function in isolation. Correct. So we will have to talk about this thing as a Gharak. What do we want to see? Sorry, I speak Gujarati, so I don't say Gharak. I say Gharak. So please move forward. So I don't want to leave you with sadness in your heart. There are many things. All states try to improve. They all try to improve. So this is an indicator of the good news. We took 53 indicators that were common to all these states, and we said how many have actually improved in the police, in the prisons, in the judiciary, in legal aid. And we found that Bihar had improved the most. Now still they are backward, but in terms of themselves, and this was one of the reasons why we did the ranking of states. We did the ranking of states because we wanted states to compete not only with each other, but also take pride in improving themselves for their own citizens. And to be able to say that we have improved. Now kindly look at Bihar. Bihar improved in policing indicators, in prison indicators, more money for prisons, more doctors for prisons, more food for prisons, more industry for prisons. These things reduce their vacancies. Bijan is trying to interrupt me, so I will end with one more. We have to go to the last, your last message to the listeners, your last message. Sure. Please go to the last slide about, last one. Next one, the one about in nudges. Oh, this is the nudges one. This is the one. Yeah. See, I will leave this on the screen, but I want to tell you what I believe. One is you must localize justice. You must make the conversation about justice, about universal justice available at the doorstep, like food. No village can say that I don't have a primary healthcare center. No village must be able to say I cannot get legal help when I need it. I cannot walk 70 miles to get legal help. You cannot say that. Second thing is training. Less than 1.3% is used in training. Of all the budgets, training gets very, very little budget. You have to improve the money given to budgets, but also the quality of the training that is given. Vipul found the same thing when he was talking about policing, that hardly after you become a policeman and you've got your basic training, nothing is given to you. Forensics is a huge gap. We have not been able to cover it, but other people, Article 39A, have been able to cover it. Forensics is in a terrible state. While you don't have forensics, you will have torture, you will have beating. Accountability. Accountability, CCTVs, body cameras. Accountability for things like under trial review committees. There is a huge setup for looking at under trial review committees. Why is it not working? Why do they not meet regularly? Public has to ask this question. Public has to be made to ask this question. SHRCs are supported by taxpayer money. Why do they not function the way they should function? Why is the appointment system as bad as it is? Why are these people taking money and not doing the work that they should be doing? Human rights violations are all across the country. Human rights violations के बारे में कोई बात नहीं कर रहा आज. क्यों? Do you know how many human rights, minorities, ST, SC commissions there are in the country? Over 130 of them. Over 130 who are taking your taxpayers' money. And yet you cannot reach one of them. If I want to go to the National Human Rights Commission
I have to pass through a barrier which is made up of sandbags and people with submachine guns. Now Maya Daruwala can go and sign a register. Can Ram Rahim? Can Bara and Minj take that chance? Would you go if you saw a submachine gun staring you in the face? These are the problems we want to put forward. The ranking will go on next year. We hope to do much more. And one of the things we want to do next year is consumer courts. How are they functioning? And for that, I plead with you to help us to get information so that we can do a really justice to how a consumer is using the courts and whether he is getting satisfaction at all. Please forgive me for going over time. Thank you very much. Thanks. No going over time. You've not gone over time. Maya, you have brought in a lot of eagerness amongst us to ask questions. So I would now open it, and can the screen be dropped? Yes, thank you. So I would request, my participants to raise their hands, because if you don't raise your hand, technologically, I won't come to know who wants to ask a question. And please confine yourself to asking questions. आप केवल सवाल पूछिएगा, अभी कमेंट्स मत कीजिएगा. यदि समय होगा तो आपका कमेंट्स भी लिया जाएगा. यदि कोई प्रश्न है हमारे विपुल जी के साथ, कोई प्रश्न है आपका, माया जी के सामने कोई प्रश्न है जो उन्होंने कहा है, वो प्लीज पूछिए, हाथ उठाइए जिनको पूछना है. कोई है? Yes, sir. I raised my hand. Yes, I couldn't see that. Please go ahead, Ramaiya ji. Sir, my question to Sri Mughal. Can't hear you. Can you hear me now any better? Little louder, please. Can you hear me any better now? Yeah, it is better now. Okay. Sir, my question is for Sri Vipul Mughal ji. Sir, you have mentioned, you are fighting for the common cause for a long time. And in particular, you measured the satisfaction, dissatisfaction from the police reforms. So maybe there are several reasons, but what I understood, one of the reason is the caste-based dissatisfaction. And these days in India, many things are measured with the caste only. Sir, is it the best or the right way to measure the satisfaction or dissatisfaction on caste basis? Vipulji. So, first of all, it's not, as you said, अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसमें there was a little bit of a discrepancy, maybe perhaps because I was speaking in Hindi, you were not able to follow fully. We are not measuring satisfaction or dissatisfaction based on caste at all. That's not the purpose. That's not what we are doing. What we are doing is, first we are asking how many people are satisfied with the police for whatever reasons. And all those questions are indirect questions. Then, sir, we see out of the remaining people, where do they come from? So there is a demographic section towards the end of the questionnaire. When the questions finish, we ask them, sir, आप कौन से गांव के हैं, आपका SC हैं, ST हैं, या आप slum में रहते हैं, या कहाँ रहते हैं. वो generally होता है कि slum, if you are talking to a slum dweller, you're talking in situ, in the location where that person is. So on the basis of demographics, you do correlations in statistics, and you see that you want to see how many of these dissatisfied people come from the underprivileged backgrounds. And in that process, you check their caste, etc. Otherwise, there is no, we don't go by the caste. We don't want to ask any caste-based questions, to say, if you are asking
a policeman. Now, this is what is going on right now. The new report that SPIR now is working on is torture, the custodial deaths and violence by the police in custody. So in that, you are asking questions of assistant sub-inspectors, that kind of people. So after you finish asking questions, you ask them, where do you come from? Are you from rural background or urban background? What is your education background? Can I come in? SC, ST. Can I come in? Yeah. You know what Professor Ramaiah was mentioning also has a connotation in terms of हम भी वही प्रश्न पूछना चाह रहे थे जो रमैया जी पूछे हैं. हम ये पूछ रहे हैं कि एज अ कंज्यूमर एक्टिविस्ट हम लोग हर सिटीजन को एक नजरिया से देखते हैं, लेकिन हम लोग प्रोफाइलिंग करते हैं उनका इकोनॉमिक पावर से. व्हाट इज दैट परचेजिंग पावर और व्हाट इज देयर पर कैपिटा इनकम, हम लोग उस ढंग से प्रोफाइलिंग करते हैं. रूरल अर्बन, अर्निंग मोर देन 50,000 पर एनम, लेस देन 50,000 पर एनम, इस ढंग से हम लोग प्रोफाइलिंग करते हैं. हमारा प्रश्न ये है कि हम लोग इस कास्ट को क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सब सेम है. Every caste is same in my opinion in my country. There is nothing called that there is a differentiation between so and so caste and so caste. The differentiation is only between, what is his economic freedom and liberty vis-a-vis his location, from where he is coming, what kind of a family background, how many family members he has to look after, what is the profile of the family, and then, come to solutions in terms of strategy. So that it doesn't look discriminatory. Professor Ramaiah, am I right? What you have been trying to understand? Can you now answer? Yeah. So there is a difference of perception and opinion. We don't believe that. We don't believe that that's the only. You see, when you have to address situations, particularly say the tribals, when the tribals are the most backward, when you see, injustice being done much more in terms of numbers to one section of people or slum dwellers, or when you see women and children, you can't, there is no caste in this. By the way, inside there is no Brahman, Kshatriya, caste, nothing. So it's my just confusion was local. Categories. The location. Yes, sir. If you are talking tribal, So, that means you are tribal, yes. tribal areas and you are looking at those tribals, who are Yes, living at that area. I have no objection to that. We also look at, location, rural, urban, tribal, which part of India you are located in. We look at all that, and we are very happy to do that. But of course, I see every survey has its own dimension, and we appreciate your dimension that you are trying to subdivide it to understand who are those victims who are maximally affected. And we are narrowing down our search for such victims to find a solution to them. I fully agree to you, and I appreciate your study. And there's one particular. I'll just give you one example. The cases against SC. So the cases we asked 3 or 4 questions and battery of questions directly and indirectly to find out what the non-SC police officers think about cases of discrimination filed by the SC. So about 80 to 90% of non-AC police officers believe that the cases that SC people file of caste discrimination are false. And about 80% of scheduled caste police officers themselves think that those cases are actually right and the non-SC are discriminatory. Now, very good. We suggest towards the end, we say that there should be training of caste dimension. Perfect. The police should be trained in discrimination, number 1, caste-based discrimination and tribe-based, etc. discrimination. So the rest is in their hands, how they do it. Dr. Anamika, you have raised your hand. Dr. Anamika.
Hello, hi everyone. I'm just going to take a few seconds to introduce myself and then I'll come to the question. So I'm representing Professor Mishra's organization. I have joined there as a director, and it's definitely, it's an opportunity, and I'm so happy to be a part of this forum today. This is a real topic of my interest. So I'm going to put this question to open forum to all the distinguished and eminent speakers. Sir and ma'am, would you just throw some light regarding, like, do we have any measures, taken by government or maybe by the system, I mean judicial system, regarding the pendency and the delay in the judicial system? Do we have any measures or do we have any system in place? So that is from my side. Thank you. Maya, I think. Yeah. Yes, of course, there are measures. The government measures very carefully the time taken for cases. There are lots and lots of studies. The national, what is NJDG, the National Judicial Data Grid. If you look at it, it has all these kinds of details. There are different types of cases, how long they take, etc. The studies have been done by Vidhi, by Daksh, and why there are other studies that show why they delay, some because of adjournments. Others have looked to see even the adjournments, kaun se adjournments hote hain? Is it the lawyer from the defense? Is it the lawyer from the prosecution? Is it the respondent? Is it because the judge wasn't there? So there's plenty to measure, but there is very little to say कि उसके बारे में क्या किया जाए. What are we to do about that? And that is got something to do with the realm of case management. You see, case management is an art. It's a science. And you have for that a broad case court managers. You are, when you make a chief justice, you are saying you are in charge of deciding cases, adjudicating cases, allotting cases, looking after the administration of the whole court, whether it is about the sweeper's pay packet or whether it is about whether you should have selection of a new judge and how is your subordinate court behaving, and you better go on tour and see that the subordinate court is behaving properly, and if there's some complaint then you better adjudicate it. And you've got 40 committees. I was just in Tamil Nadu and they have some 37 committees, and on 37 committees the Chief Justice is overall the head to everywhere there's need for adjudication, they go to the Chief Justice. Now you're asking this same man who is trained in adjudication to run around and do all this work when actually you should have a court manager. You should have an overall court manager who's your COO. He's your chief operations officer. And you mustn't hire somebody who was brought about 10 days ago or an MBA who's come out of school 5 days ago. You must have a person who's an MBA and who is trained in the MBA that is required for the judiciary. Next question. Sir, Can I just add something, sir? Just a minute. Vipulji, I like to give opportunity to my participants to ask questions first. Sure. Sorry. Sudeep ji. Yes. Sudeep ji, please unmute and come. Sudeep Sahu ji. शुक्रिया। Yeah. मेरा ये कहना है कि जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो आपने बनाई, आपका सिग्नल कट जा रहा है, आपका सिग्नल कट रहा है। में बहुत मेहनत से बनाई है और सरकार को ये दाखिल भी की गई होगी सरकार के पास, लेकिन आप दाखिल करने के बाद क्या सरकार ने आपका स्पीच कट रहा है, क्या एक्शन लिया, क्या उनका रिएक्शन हुआ, इसके बारे में जानने की कोशिश
करिए, मेरा यही प्रश्न है कि वो पता ही नहीं है, तो आप ये पता करिए कि इस रिपोर्ट का क्या। Could you? हाँ जी। Maya and Vipul, could you understand what Sahuji asked? Yes. I'll just tell you whatever I could gather. He is saying that the reports which you have generated, the evidences which you have created, have you given them to the government and got a response from them in terms of what they propose to do with such reports and how to move forward? Yes. Shall I take that, Vipul? Yeah, sure. Yeah. Yes, we have got reaction from the government. But the kind of reaction that you are thinking of, that they looked at the report and said, "हाँ भाई, ये तो बहुत ही अच्छा है, अब हमको कुछ करना चाहिए," ऐसे reactions नहीं आते. What reactions we get is they quote the many assemblies and the parliament have quoted the report and said, "Look, these are the figures." And we must start to look at them, and we must start doing something about them. The Department of Justice has asked us many questions because they wanted to brief their minister. Then, as I told you, I think somebody told me, now I'm not sure about this, that the NCRB, the National Crime Records Bureau, wants to take out a prison report and rank the states. So that would be our influence, that this is a good thing to do. We'll rank the states, and maybe how they rank the states will be different. But it's slowly beginning to snowball, that people are looking at data. People have got a ready reference for data. Just like whenever I need to look at something about policing, training, or something, I go back to Vipul's report. Now, Vipul doesn't know कि ये report influence हो रहा है कि नहीं हो रहा है, but he knows that I am looking at the report and I am writing that thing again and again. You know, it's like saying, भाई औरतों को मारना नहीं चाहिए. एक आदमी बोला तो दोनों ने थप्पड़ दिया. 20 आदमी बोलने लगे तो लोग सोचे कि हाँ भाई शर्मनाक बात है. अब 2000, 3000, 2 लाख, 6 लाख, millions बोल रहे हैं कि औरतों को मारना नहीं चाहिए. It's become something that has become defensible. Yeah. So Maya, many people would be listening to this, what you all have said today, because of, we go on the YouTube, there is a press release. So I come to Binaji. Binaji, you had raised your hand. Please unmute and come. And I'm presuming my participants. मेरा question Mr. Budgal से है. 1 minute. I'm presuming my participants want the session to be extended, so we are extending it beyond 12:30 with your permission. Thank you very much, Beena ji. हाँ जी, मैं आपसे ये क्वेश्चन, अब बहुत अच्छी आपकी रिपोर्ट है. As a social worker, I want to discuss more about this. बट यहाँ मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपने ट्राइबल के लिए कहा कि ट्राइबल दे आर नॉट गोइंग इन पुलिस एंड दे आर गोइंग, मोर पीपल आर गोइंग इन जेल एंड फॉर क्राइम, एससी वगैरह, एंड दे आर गोइंग मोर इन जेल एंड blah blah. But I have a question, that have you studied why they are not going in police or other services, and why they are not going in jobs or coming out and mixing up with normal people? What is the reason for that? So there is somewhere lacking from our government and ourselves as an NGO also. We are not reaching them to take them out from their natural life, what they are leading. This is my question. बीना जी, थैंक यू. जैसे माया ने पहले कहा था, तो मैं पहले आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के साथ लगातार हम लोग बातचीत करते हैं. नीति आयोग को हम प्रेजेंटेशन देते हैं, और नीति आयोग जब भी हमें बुलाता है तो हम हाजिर हो जाते हैं. कुछ भी हो, हम लोग पहुंच जाते हैं अपने कागज लेकर कि सर ये ऐसे है, देख लीजिए इनको, और हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है. लेकिन नीति में रिफ्लेक्ट पूरी तरह से नहीं हुआ. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है. यहाँ तक कि जुडिशियरी जो किसी से बात नहीं करते, वो भी, उनका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है. तो ये तो पॉजिटिव बात है. दूसरा ये कि जो ट्राइबल्स के बारे में हम जो मानते हैं, अक्सर ये रिपोर्टें हमें क्या करती हैं कि ये हमें शीशा दिखाती हैं
बिल्कुल बस और कुछ नहीं। सिर्फ ये बताती है कि हमारे दिमाग में ना प्रेजुडिसेस बहुत है। हम लोग जो हैं वो कुछ प्रेजुडिसेस तो बचपन में भर दी गई हैं। मेरे तो अक्सर ऐसा होता था, जब मैं छोटा था तो बता दिया जाता था कि उसके साथ मत करो, वो लोग बड़े चालाक होते हैं। तो अब हम भी करते होंगे किसी ना किसी तरह से अपने बच्चों के साथ में, पता नहीं भगवान जाने कैसे वो हमारे अंदर बैठी हुई हैं। तो प्रेजुडिसेस बहुत है हमारे मन के अंदर, और कुछ जाति को लेके काफी प्रेजुडिसेस हैं, और कई तरह की, तो वो पुलिस के अंदर भी आती हैं। तो अभी पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि जो डिजिटल पुलिसिंग है, जब एल्गोरिथम के अंदर प्रेजुडिसेस घुस जाती हैं, तब तो भगवान ही मालिक है कितना खराब हो सकता है। प्रेजुडिसेस कहीं पे काले गोरे के प्रति प्रेजुडिसेस हैं, कहीं पे जाति के आधार पे, कहीं धर्म जाति के के आधार बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा है। तो हमारा अपना उसमें जनरली कहना ये होता है कि हम आपको मिरर दिखा रहे हैं, अगर इसमें कुछ गलती है तो आप हमें बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे। बाकी नीति बनाना आपका काम है। वी वेरी स्ट्रांगली रेकमेंड कि ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग सबकी हो, पुलिस की। वी वेरी स्ट्रांगली रेकमेंड कि हर साल रिफ्रेशर कोर्सेज हो। जेंडर की ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त होनी चाहिए पुलिस की। उनको समझना चाहिए कि किस तरह से लोगों के साथ में पेश आना है, और लॉ की ट्रेनिंग बहुत होनी चाहिए। तो हम लोग लगातार यही कहते हैं, बाकी मिरर की कोशिश हमारी रहती है। बहुत खूब, वेरी वेरी गुड। आई डू अंडरस्टैंड, माया भी उस पे बहुत विस्तार से टच किया, कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर, किस ढंग से कैपेसिटी बिल्ड करना चाहिए। डॉक्टर पी रामाराव, द चेयरमैन ऑफ कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल। डॉक्टर पी रामाराव, you raised your hand. Thank you, Mr. Bijon. Am I audible? Yes, you're audible. Yes, sir. Yes, sir. So, good afternoon, everybody. I'm expressing my sincere thanks for introducing Mr. Bijon. I know that Mr. H.D. Sauri was the founder, chairman of the CCC. Now I got this opportunity. But my only question on the consumer cases disposal, in spite of the new act, why we are unable to dispose the cases in stipulated period of 90 days, if there is an analysis, 150 days. The reason is the section 38 and subsection 7 is having a lot of loopholes. With a due respect to the commissions and lawyers, kindly analyze it for each and every para at the end. If necessary, the commission can write the reasons for extending them. That word is creating a lot of delay in the cases. Is there any case in India settled within 90 days till to date? I don't think anything. So that's why I request all of you, the great stalwarts present today, to insight to the section 38 and subsection 7. So next time we definitely discuss on that. What are the loopholes in that? What are the things to be amended? Then only we get the justice. If I don't get a justice within the stipulated period, how can I go to the court? Thank you, Vipulji. So which subsection? Thank you. Section 38, which subsection? 7. Okay, thank you. Yeah. Hello. Right. एक मिनट आशीष जी, एक मिनट आप होल्ड ऑन कीजिए। आपको आना होगा तो हाथ उठाना होगा। आपके नीचे में वो आइकॉन है जिसमें रेज हैंड है, आप उसको प्लीज रेज कीजिए। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, हम लोग के बीच में 2 साइंटिस्ट आए हुए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग एंट्री है साइंटिस्टों का। एक तो है डॉक्टर साहू और एक है डॉक्टर जयप्रकाश जी। डॉक्टर जयप्रकाश जी, आप हैं हम लोग के बीच में? अनम्यूट होकर आइए। आपका चेहरा हम देखे थे। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, आई एम देयर सर। हम थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन दे दें। डॉक्टर जयप्रकाश हमारे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो फार्माकोपिया को बहुत क्लोजली देखते हैं, आपके दवाई का गुणवत्ता, उनका सही लोगों तक पहुंचाना, और वो कई इनिशिएटिव सरकार की तरफ से करते हैं, और वो सरकारी मुलाजिम है जो सरकार के तरफ से हम लोग तक पहुंचते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच जयप्रकाश जी कि आपने समय निकालकर संडे को आए हम लोग के बीच में। आप आए एज अ कॉमन मैन, नॉट एज अ आई वुड से
as the scientist of Government of India. So any questions, or do you want to say quickly some things to us? Sir, I was carefully listening to this whole series of the presentations done by the eminent persons. So it's a new topic for me, but we see that in the judicial system, the things should be expedited so that the people get the justice very well in time, sir. Very good. Dr. Sahu, who is the director of the Indian Dope Testing Laboratory, Government of India. Dr. Sahu. Thank you, sir, and thank you very much, everyone. Really, it's a great session for me also. Today, we learned a lot of things and understood in depth. So I congratulate to Bipulji and Maya Madam. Really, you are doing great job and bringing some improvement. But I am also confident it will take time. It's not one-day job. But your efforts is being means they will certainly bring some improvement in the system. As my colleague said, Dr. Jayaprakash, there is a really need to improve the process so people can get justice on time. Otherwise, some people are getting justice after 30 years or 40 years. There's no meaning. They have lost everything, whatever. So there is a need. And Bipul ji, आपने भी बहुत अच्छा सर्वे कर रहे हैं, but इन सर्वे में मेरा एक सजेशन है that it should be done in real some rural area where in गांव में अभी भी मेरा भी कुछ है जो देखता हूँ, गांव में बहुत हालत खराब है सर अभी, and lot of improvement even in education, in health, everywhere is required. And before that, if anything can be done Thank you. Vipul ji, yes. You want to respond? सर एक छोटी सी बात इसमें मैं कह दूं कि ग्राम न्यायालय की व्यवस्था हमारे यहाँ दी गई है, लेकिन उसमें कोई प्रगति नहीं हुई. जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उसकी वजह से तो कई जगह पे जो आकलन करते तो हम उसमें ये भी कहते हैं कि आप बारीकी से देखिए कि केस किस प्रकार के हैं. मान लीजिए 30,000 केसेस में से अगर 24,000 केसेस चेक बाउंस केसेस हैं या बिजली के बिल के संबंधित केसेस हैं, तो आप तुरंत लोक अदालत बैठाइए, जल्दी जल्दी लोक अदालत बैठाइए और उनका निपटारा कीजिए आप. तो वो मतलब लगातार अगर रिसर्च करते रहे, स्टडी करते रहे, कोर्ट को खुद करनी चाहिए जो काम इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कर रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड. आशीष जी आइए प्लीज. आशीष जी. हाँ, हेलो जी, प्रणाम सर. सर मैं आशीष रंजन, पत्रकारिता का छात्र, मगध विश्वविद्यालय बोधगया बिहार से. सर मेरा प्रश्न यह है कि जब अगर सर सामान्य कोटि और SC/ST कोटि के बीच अगर बाई चांस अगर झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, तो सर ये कितने बार मैंने अपने आंखों से देखा है कि सामान्य कोटि के लोगों के ऊपर तुरंत SC/ST एक्ट जो है वो लग जाता है, हरिजन एक्ट लगा दिया जाता है. अगर सर लगा दिया जाए तो फिर उससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि उसके पीछे फिर पुलिस भी पड़ जाती है. तो इससे बचने का उपाय क्या है? तत्काल उपाय नहीं है सर, हमारे पास उपाय नहीं है इसमें. ये बात सही है कि बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिनको अभी देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड वाला केस चल रहा है, उसमें लगातार ये बात कही जा रही है दोनों पक्षों के द्वारा कि देखिए हर लॉ का दुरुपयोग हो सकता है. और इसका ये मतलब नहीं है कि आप लॉ ना बनाएं. जैसे दहेज का लॉ है, ये बनाया, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा केसेस होते थे महिलाओं के उत्पीड़न के, लेकिन वो लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बन गया. उसमें कई जगह पे ऐसा देखने को आया कि उसका जितना फायदा होना चाहिए उससे ज्यादा नुकसान कई जगहों पे हुआ है. तो उसको थोड़ा सा ठीक करने की आवश्यकता है. वो लेजिस्लेचर के भी हिस्से में आता है थोड़ा सा, जो हमारे न्याय बनाने वाले लोग हैं, जो कि विधायिका यानी कि असेंबली और पार्लियामेंट और कुछ कोर्ट्स के ऊपर आता है. तो बाकी मतलब इसमें हमारा उपाय हमारे पास नहीं है. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, देवेंद्र तिवारी जी. देवेंद्र तिवारी, अनम्यूट करके आइए और वीडियो ऑन कीजिए. अनम्यूट करके आइए, वीडियो ऑन कीजिए. यस प्लीज कम. देवेंद्र जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए. देवेंद्र जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए. हाँ जी आइए. अभी आ रहा है, आवाज आ रहा है सर? आ रहा. प्रश्न पूछिए. सर हम आज जो डिस्कशन हो रहा है उस 3-4 विषयों पर डिस्कशन हुआ, जिसमें
SC/ST बैकलॉग के ऊपर में और पुलिस का जो अत्याचार वो इस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 90 डेज में तो नोटिस भी इशू नहीं होते हैं। एंड पुलिस महकमे में 3 प्रकार के जो डिपार्टमेंट होते हैं, इसके बाद पहला नॉर्मल पुलिस, इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन एंड CBI, 4-5 इनके अगर जब तक के डिफरेंस अपॉइंटमेंट नहीं होते तब तक इनमें चेंजेस नहीं आएगा। एक ग्रामीण भागों में जो अव्यवस्था है, गवर्नमेंट का एक्चुअल में जो ध्यान है वो ट्राइबल पर बहुत खर्च हो रहा है। उसका जो खर्च होने का जो तरीका है वो किसी NGO और ट्रस्ट के मार्फत और बिजनेस के मार्फत नहीं हो रहा है। थर्ड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, तो इसके लिए जो लोक अदालत, जैसे सर ने मेरे को सुना मैंने सजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट और गुड सजेशन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है, ये गवर्नमेंट भी चाहती है, कोर्ट भी चाहता है कि भाई दोनों पार्टियां मिल बैठ करके काम करें। इसके बाद में थर्ड है ग्रामीण स्तर को कैसे सुधारना। ग्रामीण स्तर को सुधारने के लिए हमारे जैसे या आपके बिजौन सर के जैसे प्रोफेसर के जैसे रमैया सर है, इसके बाद में रामाराव सर है, इनके जैसे जब तक लोग 100% लोग आगे नहीं आते तब तक इसमें परिवर्तन नहीं आता। एक्चुअल में जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी। थैंक यू देवेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है। अब हम चाहेंगे ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। ओम प्रकाश जी, संक्षेप में बोलिएगा प्लीज, संक्षेप में आपका प्रश्न संक्षेप में बताइए प्लीज, आपका प्रश्न संक्षेप में पूछिए। मेरा प्रश्न सिंपल है कि बहुत सब जो प्रॉब्लम मैंने समझा सुना है वो सब हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हुए हैं। इसके लिए मैं आज के सेमिनार के उपस्थित वक्ताओं का स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। मेरा प्रश्न है कि समस्या है जजमेंट के केसों की बहुतायत की, उसको दूर करने के लिए मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी पद्धति है क्या नहीं जिसके अंतर्गत जो शांति चाहते हैं, जो लोग विक्टिम भी शांति चाहता है, अपराधी भी, अपराध करने वाला भी शांति चाहता है, और आसपास के लोग भी, इंटरेस्टेड समाज भी के भी संबंधित लोग चाहते हैं। ऐसा एक ठो रूबरू बैठक की तरह, जैसा हमारा रूबरू बैठक RJS परिवार ने किया है, उससे हमारी सकारात्मकता का फैलाव ज्यादा अच्छा हुआ है। उसको उसी तरह से जजमेंट का एक ऐसा विधान कोई है क्या नहीं, थैंक यू, जिसमें शांति चाहने वाले अप्लाई करें और सबको एक साथ लाकर समस्या समाधान। थैंक यू ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखे हैं सामने। अब हम एज अ मॉडरेटर हमको भी थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए, लेकिन बिफोर दैट, बिफोर आई हैंड ओवर द माइक back to Praful Bhai and Uday Manna ji, I would like last few words to be given by Bipul ji and Maya ji before I give my comments, in terms of summarizing what we have done today. Bipul ji and Maya ji, please. देखिए, मैं संक्षेप में ये कहूंगा, एक तो मुझे शब्द ही बड़ा पसंद आता है आपका, सकारात्मक शब्द जैसे ही आपने कहा तो उसमें बहुत सारी चीजें सुलझ जाती हैं अपने आप। तो देखिए, हमारे एक सकारात्मक प्रयास बहुत पहले से चल रहा है, वो है ई-कोर्ट्स मिशन। उसमें सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है, इस सरकार ने भी बहुत पैसा खर्च किया है और बहुत कई चीजें सुधरी हैं। उसमें यह है कि भाई जब आपका केस लगता है तो आपके पास सुबह आपके मोबाइल पे मैसेज चला जाता है कि भाई आपका केस की संभावना आज है। तो वो उससे क्या होता है कि जैसे डेली वेजर, अब रिच और पुअर की बात बहुत जरूरी है मेरे लिए, वो आती है बीच बीच में। तो जो गरीब आदमी है उसके लिए ना एक दिन कोर्ट जाना पड़ता है तो एक दिन की वेजेस की हानि हो जाती है, उसकी तो रोजी रोटी गई दिन की, और वो केस भी नहीं लगा और लौट के आ गया। तो जो दूसरा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो एक दिन की छुट्टी लेके जाता है या हाफ डे लेके जाता है, उसका काम चल जाता है। तो ई कोर्ट्स मिशन में बड़ी अच्छी सकारात्मक चीजें हो रही हैं अभी भी। मैं कहूंगा 10 में से अगर नंबर दिए जाए तो उसे करीब 4 दूंगा, 4 साढ़े 4, लेकिन 0 नहीं है, तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है आने वाले समय में
थोड़ा सा सुधार इन चीजों में हो। दूसरा मैं कहूंगा जो माया ने कहा था, उन्होंने बहुत छोटे शब्दों में कहा था, जो कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, देखिए एक डायल जैसे कार में होता है कि कितने मीटर की रफ्तार पे चल रही है, उसी तरह से एक डायल अगर हो कि जिसमें ये बताए कि किस जज ने कितने केसेस संपन्न किए, कितने केसेस। कई जजेस ऐसे हैं जो छोटी जगहों में 3 बजे बैठते हैं और 5 बजे उठ जाते हैं। तो वो सब चीजें आजकल के डिजिटल जमाने में बड़ी आसान हो गई हैं देखना, किस प्रकार के केसेस कितने दिन में दिए। तो कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से आने चाहिए उससे नहीं आ पा रहे। और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है ADR, उसमें भी उन्नति हुई। वेरी गुड। माया जी, यू हैव टू अनम्यूट एंड कम। मेरे एम्बिशंस इतने कोई बड़े नहीं हैं। I was only talking about the justice report and talking to you बेजान and to your colleagues. बहुत से लोग हैं यहाँ जो अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हैं और अलग अलग प्रयासों से जुड़े हैं, और वहाँ हम लोग ऐसी प्रेजेंटेशन कर सके। डॉक्टर शेठ है, डॉक्टर जैन है, डॉक्टर जयप्रकाश है, डॉक्टर साहू है, बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने बात नहीं की है, लेकिन इवन मिस्टर मुथियाला, I would say, Dr. Ramaya, if we could make these presentations to different places, whether abroad or whether in your own areas, it would be wonderful, because the more we multiply this conversation, like I said, you know, my favorite analogy is, it's like drops of rain on a window pane. Slowly they come together and they make a stream. And we want this stream to happen so that people who are living in rural areas, people who are tribal, जैसे आपने कहा ना बीना जी, their natural life, उनकी नेचुरल लाइफ हम क्यों डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं? लेकिन हम अपने आप को काबिल नहीं कर सकते कि उनकी नेचुरल लाइफ समझते हुए हम उनके लिए प्रणालियां बनाए जो कि वो दे कैन एक्सेस इट, यू नो। वो हमारे जस्टिस सिस्टम में नहीं मानते, लेकिन उनके अपने जस्टिस सिस्टम्स हैं जो कि वो चाहते हैं कि अमर रहें। So those people who want to come out of it, those people who want to go back into it, can be helped. But my request would be, if out of this interaction I get 10 more interactions, I will consider it a great success. Thank you very much. Thank you. You will not get only 10. I think you will get hundreds of them now. What I want to say as a moderator, and I would like to close it, saying that you both have worked extremely hard to create evidences, and you have brought intangibles into tangibles, which is a great work which you have done. I would like to acknowledge that, and like to acknowledge on behalf of all the participants who are here today, number one. Number two, these evidences becomes a great effective tool for us to create an advocacy group to go to the next level in terms of not only police reforms, but also an efficient justice system in the country, which is required. Having born in a place called Jamshedpur, which was part of Bihar, now it has become part of Jharkhand. But I call myself a Bihari by birth. And I was extremely delighted to see that Bihar has made certain incremental improvements in many spheres in terms of a good prison quality and improvement in prisons, not only in prisons reforms, but also justice system. Today, I would like to announce on behalf of on behalf of Consumer Online Foundation and Aware Consumer, the magazine which comes out every month, that we would definitely like to dedicate one of our editions to carry these reports and collate a kind of a resource center to bring all these informations at one place. That is number one. Number two, I would like to look at Bihar as a pilot, because there are a lot of Biharis who are in this family of Hamare RJS Parivar.
And not only because of that, but people somehow have a wrong notion that बिहार में कुछ बदलाव नहीं हो सकता है, जो हम विश्वास नहीं करते हैं. In fact, as I told you, Bihar was the first state in the country which enacted the Consumer Protection Act 1986 by setting up the first state commission in Patna. So a lot of impossibles can become possible in Bihar. And I would recommend that let us take this as a project. And I would recommend that we would take this to a level where people should be able to acknowledge the great work which Maya and Vipul have done, that we have converted into some small, believable kind of a models. And let's develop a pilot in Bihar, that if Bihar can do, why India can't do, and why it should be only confined to southern states. It should also be seen in all the other parts of the country. So having said that, I think there is a lot of thought for us to ponder about, which you both have given in front of us with evidences. And I'm sure these evidences will one day will convert our dreams into a reality. You know, having said that, I would like to hand over the mic to Praful Bhai and Uday Manna ji. Uday Manna ji. उदय जी, मैं बोलूं या आप बोलेंगे? मैं काफी देर से चुप था और चुप रहने की आदत नहीं है, आकाशवाणी की वजह से लगातार बोलने की प्रैक्टिस है, तो मैं बड़ा संयमित तरीके से लोगों की बातों को सुन रहा था. और गांव चलें, आओ गांव चलें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जब शुरू किया था, पहला इंटरव्यू हमने किया था, आओ गांव चलें. तो ये आरजेएस जो है गांव चलें को लेकर, और आरजेएस एडवाइजर बिजोन मिश्रा जी ने जो कहा कि बिहार को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, तो आरजेएस बिल्कुल मिश्रा जी के साथ खड़े रहेगा. और जो भी वहां पे काफी लोग जुड़े हुए हैं, वहां के प्रभारी भी हैं, तो हम लोग कुछ करें, आना जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बिहार में करेंगे. मैं आश्वस्त करना चाहता हूं प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी को. मैं टेक्निकल टीम से चाहूंगा कि आज इतनी मतलब अच्छी जानकारी जो दी गई है, शायद न्यायिक व्यवस्था पर पहली बार आरजेएस ने, जो कि पॉजिटिव मीडिया पॉजिटिव इंडिया का अभियान चला रहा है 2047 तक, हर रविवार आरजेएस वेबिनार, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं, विधायिका फैसले को खारिज नहीं कर सकती. ये अपने आप में देश को बहुत संदेश दे रहा है, और इसका समर्थन करने के लिए 140 करोड़ को आगे आना चाहिए. कि उनका कहना है कि विधायिका अदालत के फैसले में खामी को दूर करने के लिए नया कानून बना सकती है, लेकिन उसे सीधे खारिज नहीं कर सकती. और वह कार्यक्रम में बोल रहे थे, उन्होंने कहा न्यायाधीश इस पर गौर नहीं करते हैं कि जब तक मुकदमे का फैसला करेंगे तो समाज कैसी प्रतिक्रिया देगा. सरकार की विभिन्न शाखाओं और न्यायपालिका में यही फर्क है. और आगे उन्होंने कहा था कि जज सेवानिवृत्त हों ताकि नई पीढ़ी नया सिद्धांत बनाए. तो ये दैनिक जागरण जो दिल्ली का अखबार है, उसकी आज की ये क्लिपिंग आपको दिखाई गई, क्योंकि हम लोग भारतीय न्यायिक व्यवस्था पे बातचीत कर रहे हैं. मैं बहुत ही आभारी हूं कि हम लोगों को भी दिशा जब इस वेबिनार से मिलता है तो आगे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है. और मायाजा दारूवाला जी ने जो वाइब्रेंट प्रेजेंटेशन दिया, और वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे लोगों तक पहुंचेगा, और हम लोग जो है विपुल मुदगल जी की बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. और सकारात्मक शब्द जो उन्हें अच्छा लगा, तो ये 9 साल से सकारात्मक एंड ओनली सकारात्मक, ओनली पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी, यही आरजेएस का उद्देश्य देशवासियों तक पहुंचाने का है. लेकिन वरद हस्त जो बिजोन मिश्रा जी हो या हमारे दीपचंद माथुर जी जो एमसीडी से डायरेक्टर रिटायर किए, वो आरजेएस ऑब्जर्वर लगभग संस्थापक ही हैं. और आरजेएस पीबीएच के ऑब्जर्वर राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस, जिसके अंतर्गत पॉडकास्ट भी है. ये जो पूरी रिकॉर्डिंग है, ये पॉडकास्ट में भी प्रसारित होगी, प्रेस रिलीज जारी होगी. तो मैं आरजेएस पीबीएच
ऑब्जर्वर जो बड़ौदा गुजरात से प्रफुल्ल भाई को आमंत्रित करूंगा, जो कि कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। और आज द अवेयर कंज्यूमर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के सहयोग से हम लोग ये अभियान जो है आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रफुल्ल भाई, सादर वोट ऑफ थैंक्स के लिए आपका सादर स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। मेरे ख्याल से बिजॉन मिश्रा जी है, माया दारूवाला है, विपुल मुलगट जी है, ये सारे हमारे समाज के, हमारी इस सोसाइटी के जेम्स हैं। जब तक उनको हम इतना अच्छा सुनेंगे नहीं, जब तक हम उनकी राय सुनेंगे नहीं, तब तक हमें नहीं लगेगा कि हमारा काम समाप्त हुआ है। तो ये आज सुनने के बाद ऐसा लगा कि इसको तो कोई, मैं वैसे वोट ऑफ थैंक्स में कुछ बोल नहीं सकता कि भाई इन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। उन्होंने सब कुछ कह दिया, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है बोलने का। लेकिन एक दो बातें जो करी है वो यही कहूंगा कि सिटीजन सेंट्रिक सर्विस जो मुदगल साहब ने पहले कही, वो सिटीजन सेंट्रिक सर्विस इन रियल मैनर, इन द रियल मीनिंग, आई थिंक हमको लानी है। वो हमारे कंधे पे है। हमारा आपका दोनों के जो रिपोर्ट्स थे, दोज रिपोर्ट्स आर आई ओपनर्स। और वो पढ़ के सुन के 40 मिलियन केसेस, क्या हम कभी सोच सकते हैं 40 मिलियन केसेस इन इंडिया आर पेंडिंग, एंड अवर जेल की कंडीशन 130% ऑक्यूपेंसी। हम कहाँ पे हैं? हम क्या बात कर रहे हैं? तो ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि दिस डायलॉग मस्ट कंटिन्यू सकारात्मकता से। जैसे मन्ना जी ने कहा, नो नेगेटिविटी, सकारात्मक से ये डायलॉग चलता रहेगा। और जैसे बिजॉन्दा ने कहा है, मैगजीन में भी और यहाँ पे यूट्यूब और पॉडकास्ट वगैरह में भी चलता रहेगा। और वी वुड इनवाइट यू वंस अगेन टू आवर प्रोग्राम as and when it is convenient to you, because I think this program should become a regular feature. So that's all from my side. Thank you for coming to us today and spending your time. And thanks to all the participants who have come here and participated. Thanks a lot. Jai Hind, Vande Mataram. जय हिंद, वंदे मातरम। प्रफुल्ल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सभी जो कार्यक्रम है वो का समापन जो है एक नई शुरुआत से होती है। और नई शुरुआत यानी कि दीपावली के दिन भी राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर करते हुए, क्योंकि पूरे विश्व में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और यही हम लोगों की एक ताकत है। दीपोत्सव के दिन हम लोग तमसो मां ज्योतिर्गमय एक एजुकेशनल प्रोग्राम करने जा रहे हैं और इसके को ऑर्गेनाइजर हैं अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी। और 11 बजे से 12:30 बजे तक का समय दीजिए। दीपावली पर एक नया डायमेंशन लेकर आ रहे हैं हम लोग। प्रोफेसर परिचय दास जी भी होंगे, निखिलेश मिश्रा जी भी रहेंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में स्वागत और वोट ऑफ थैंक करेंगे दुर्गादास आजाद जी जो कि RJS PBH के पैनलिस्ट हैं। तो इसी के साथ मैं उदय कुमार मन्ना, राष्ट्रीय संयोजक और संस्थापक RJS PBH, RJS पॉजिटिव मीडिया, आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि देश में इतिहास बनाने की पीढ़ियों में आप शामिल हो रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। और मुथैया साहब का तो मैं दिल से आभार करता हूं कि आपका डेडिकेशन जो है वो मतलब आप भारत को एक बहुत ही दिशा दे रहे हैं, NRIs को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि भारत से जुड़ना, आपके दिल में भारत बसता है, ये दिखाई दे रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए,
क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।